Assalamu alaikum, hi viewers. I'm Dimrana from Government Graduate College Toba Texting. I hope you all fit and fine. Welcome to my channel. Welcome to the world of English literature. Welcome to the world of short story. Today's short story is The Sunrise on the Veld by Doris Lessing. आज की बड़ी शॉर्ट स्टोरी है. इसका जो थीम है वो बड़ा यूनिवर्सल है कि एक हम पे फेज़ आती है, मतलब आइडियलिज्म की, एक आप कह लें कि फैंटेसी की, फैंसीज की. when we feel ourselves at the top of the world, when we feel jovial, jocund, jocular, over the moon, on cloud 9, in the seventh sky, we feel ecstatic all the time. हमें लगता होता है कि everything is under our supervision, under our control, कि हर चीज़ हमारे ताबे है. आप इतने अपने आप को robust, आप इतने अपने आप को पावरफुल, स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, यानी टीनेजर की जो एज होती है. लेकिन हमारा एक आप कह लें कि एक पीरियड चलता है, एक टाइम चलता है, एक स्पैन हमारा चलता है, टाइम ऑफ इनोसेंस. फाइन. तो ये हमारा जो तलस्सम है, ये जितना भी हमारा है, जो आप कह लें कि इल्यूजन है, आइडियलिज्म का जो एक फ्रेम होता है, जो प्लेन होता है, फाइन, ये टूटता है अचानक से जब कोई भी हमें कोई एक्सपीरियंसेस से हमारा वास्ता पड़ता है. जब हम मूव करते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस टू द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, जब हमें आगे ही आती है, शनासाई आती है, हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है, चीज़ों की हकीकत से हम आशना होते हैं, तो ये जो हमारा जो आइडियलिज्म है ये टूट जाता है. तो यही कहानी बेटे एक लड़के की है इस स्टोरी के अंदर, जो मतलब बहुत ही अपने आप को आप कह लेंगे स्ट्रॉन्ग महसूस करता है. उसे लगता है कि हर चीज़ उसके कंट्रोल में है, राइट. उसको लगता है कि दुनिया के जितने भी हीरोज़ हैं, उनकी जो यूथ है, उनका जो प्राइम एज है, वो मेरी तरह की होगी. यानी वो अपने आप को हर इससे आइडेंटिफाई करता है, रिजेंबल करता है. लेकिन उसका ये जो मतलब एक इल्यूजन है, ये सारा टूटता है जब उसका एक एक्सपीरियंस के साथ वास्ता पड़ता है. तो इसकी स्टोरी की तरह बेटे हम चलेंगे बाद में. पहले थोड़ा सा लेट्स हैव सम वर्ड्स अबाउट डोरिस लेसिंग. पहले हम जरा ऑथर के मतलब कुछ बातें कर लें, इसके मतलब थोड़ा सा हम जान लें. डोरिस मे लेसिंग इज़ अ ब्रिटिश राइटर. हर नॉवेल्स इंक्लूड द ग्रास इज़ सिंगिंग. इसका जो बहुत मशहूर नावल है वो बेटे है द ग्रास इज़ सिंगिंग, The Golden Notebook, and 5 novels collectively known as Canopus in Argos. फाइन. इसका मतलब जो अब ऑब्जेक्टिव के हवाले से सुन लें, इसका जो एक सीरीज़ है नॉवेल्स की, 5 नॉवेल्स जो कलेक्टिवली नोन एज कैनोपस इन आर्गोस. लेसिंग का नाम आपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी सुन रखा है. आ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस, ये वही ऑथर है. Fine. Lessing was awarded the 2007 Nobel Prize in Literature. 2007 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया. At that time she was just shopping. जब इसकी announcement हुई तो वो she was out there for shopping, right? तो सोचान के पता चला. She was described by Swedish Academy as that the epicist of the female experience. Epicist of the female experience who with skepticism, fire, and visionary power has subjected our divided civilization to scrutiny. Lessing was the 11th woman and the oldest ever person to receive the Nobel Prize in Literature. यानी बड़ा लेट आपने लास्ट स्टेज में आप कह लें कि 2013 में इनकी डेथ हुई है, तो 2007 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है. फाइन. In 2001, Lessing was awarded the David Cohn Prize for a lifetime's achievement in British literature. In 2008, The Times ranked her 5th on a list of the 50 greatest British writers since 1945. ये भी बड़ा important है बेटे. The Times जो जरीदा है इसके मुताबिक, तो फर्स्ट जो 15 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स हैं सिंस 1945, उनमें से इनका 5th नंबर था. लेसिंग वॉज बॉर्न इन ईरान, देन नोन एज पर्शिया, तब ईरान को पर्शिया कहा जाता था, ऑन 22 अक्टूबर 1919. टू कैप्टन एल्फ्रेड टेलर एंड एमिली मॉड टेलर, who were both English and the British nationality.
Her father, who had lost a leg during his service in World War I, met his future wife, a nurse, at the Royal Free Hospital where he was recovering from his amputation. यानी World War I में his father lost his one leg. Alfred Taylor and his wife moved to Kermanshah, Iran, in order to take up a job as a clerk for the Imperial Bank of Persia, and it was here that Doris was born in 1919. 1919 में Doris मतलब पैदा हुई पर्शिया के अंदर. Fine. The family then moved to the British colony of Southern Rhodesia, now Zimbabwe. Zimbabwe में आ गई family in 1925 to form maize when her father purchased around 1,000 acres of bush. Lessing's mother attempted to lead an Edwardian lifestyle amidst the rough environment, which would have seemed easy had the family been wealthy. It was not. The firm was not successful and failed to deliver the wealth the Taylors had expected. इन्होंने जिम्बाब्वे में आके बट इन्होंने खेती बाड़ी शुरू की. ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं इतना वहाँ पे इनका मतलब स्मूथ सेलिंग हो जाए ज़िंदगी की, इनकी इतनी प्रोडक्शन होगी, तो इस हवाले से उनको मायूसी हुई, इनको फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा. Lessing was educated at the Dominican Convent High School, a Roman Catholic convent all-girls school in Salisbury, now Harare. तब ये सैलिसबरी कहा जाता था, आजकल उनका नाम जो है वो उसका नाम जो है वो हरारे है. She left school aged 14 and thereafter was self-educated. 14 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, फिर उन्होंने खुद से स्टडी की. She left home at 15 and worked as nursemaid. She started reading material on politics and sociology that her employer gave her and began writing around this time in 1937. मतलब बेटे आप ये देखिए कि सिंपली रीडिंग से ही, कोई फॉर्मल एजुकेशन बाद में नहीं थी, तो उनका मालिक जो उन्हें किताबें देता था वो उन्हें रीड करती, यानी सिंपल रीडिंग से ही फिर वो she turned author. Lessing moved to Salisbury to work as a telephone operator, and she soon married her first husband, Frank Wisdom, with whom she had 2 children before the marriage ended in 1943. इनके हस्बैंड का नाम देख लें, फ्रैंक विजडम उनका नाम था. तो 1943 में इनकी सेपरेशन होगी. फाइन. मैरिज एंडेड इन 1943. तो उससे पहले दे हैड two children. Following her divorce, Lessing was drawn to the community of the Left Book Club, a communist book club which she had joined the year before. It was here that she met her second husband, Godfried Lessing. इनके second husband को यहाँ मिला जिनका नाम क्या था, Godfried. They were married short after she joined the group and had a child together before the marriage also ended in divorce in 1949. 1949 में फिर इनकी भी मतलब ये शादी भी एंड होगी, को divorce होगी. Godfried Lessing later became the East German ambassador to Uganda, right? And was murdered in the 1979 rebellion against Idi Amin Dada. Fine. अब इस बेटे ज़रा इनके फैमिली के मतलब जानिए. When she fled to London to pursue her writing career and communist ideals, she left 2 toddlers with their father in South Africa. Another from her second marriage went with her. She later said that at times she thought she had no choice. For a long time I felt I had done a very brave thing. There is nothing more boring for an intelligent woman than to spend endless amounts of time with small children. I felt I wasn't the best person to bring them up. I would have ended up an alcoholic or frustrated intellectual like my mother. अब बेटी ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा अपने कल्चर के हवाले से थोड़ा अनएथिकल भी है. तो उनको लगा था कि एक इंटेलेक्चुअल वुमन के लिए जो बहुत बड़ी क्रिएटिव है, उसका मतलब अपने बच्चों में सारा दिन टाइम स्पेंड कर देना, इससे ज़्यादा बोरिंग टाइम और कोई नहीं हो सकता है. यानी उनको बच्चे पालना बहुत बोरिंग की ड्यूटी लगती थी. वो चाहती थी कि जितना भी उसका वो काम है वो सारे के सारा क्रिएटिव वर्क में लगे, वो कुछ एक्सेप्शनल प्रोड्यूस करे. फाइन. यानी इन द वर्ल्ड ऑफ राइटिंग. Because of her
campaigning against nuclear arms and South African apartheid, Lessing was banned from that country and from Rhodesia for many years. ये बेटे मेरे ख्याल आपको पहले क्लियर है कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो गोरों की हुकूमत थी उसे हम अपार्टाइड या अपार्थीड, दोनों तलफ़ुज़ात ठीक हैं, अपार्टाइड या अपार्थीड, फाइन। तो मतलब जितने भी हकूक़ थे वो सिर्फ गोरों को मिलते थे और जो ब्लैक थे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, ना जॉब्स मिलती थी, वैसे भी उनका जो सोशल स्टेटस था वो बड़ा मतलब लाइक एनिमल्स था, फाइन। शी मूव टू लंदन विद हर यंगेस्ट सन इन 1949. Her first novel, The Grass is Singing, was published in 1950. Her breakthrough work, The Golden Notebook, was written in 1962. Fine. In 2007, Lessing was awarded the Nobel Prize for the Literature. She was 87, making her the oldest winner of the Literature Prize at the time of the award and the third oldest Nobel laureate in any category. She also stands as only the 11th woman to be awarded the Nobel Prize for Literature by the Swedish Academy in its 106-year history. Next बेटे देखिए, Lessing's fiction is commonly divided into three distinct phases. ये ज़रा important है, इनका जो work है वो 3 phases में उसको divide किया जाता है. The communist theme in 1944 to 1956, when she was writing radically on social issues to which she returned in The Good Terrorist 1985. Second बेटे हम देखते हैं The Psychological Theme. Second is The Psychological Theme 1956 to 1969, and after that the Sufi theme, which was explored in the Canopus in Argo's sequence of science fiction novels and novellas. Got it right? Next बेटे देखिए, when asked about which of her books she considers most important, Lessing chose the Canopus in Argo sequence. These novels present an advanced interstellar society's efforts to accelerate the evolution of other works, including Earth, Lessing's novel The Golden Notebook is considered a feminist classic by some scholars, but notably not by the author herself, who later wrote that its theme of mental breakdowns as a means of healing and freeing oneself from illusions and being overlooked by critics had been overlooked by the critics. अब बेटे उन्होंने कहा कि इस पे एक टैग लगा कि जैसे एक फेमिनिस्ट है, कि तरह उसके दूसरे थीम्स हैं वो मतलब critics ने उनको नज़रअंदाज कर दिया. She also regretted that critics failed to appreciate the exceptional structure of the novel. Fine. Lessing does not like the idea of being pigeonholed as a feminist author. When asked why, she explained, "What the feminists want of me is something they have not examined because it comes from religion. They want me to be a witness. What they would really like me to say is, 'Her sisters, I stand with you side by side in your struggle toward the golden dawn, where all those beastly men are no more.' Do they really want people to make oversimplified statements about men and women? In fact, they do. I have come with great regret to this conclusion." तो मतलब बेटे ये उनका रिमार्क्स है कि फेमिनिज्म यही है कि ओवर सिंप्लीफाइड जो सेंटेंसेस हैं एक दूसरे के मुतालिक कहे जा रहे हैं, वह जो रियल में शायद एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसका मतलब ये उसको ये बड़ा पैथेटिक और फ्रस्ट्रेटिंग सा सेक्शन लगा. एंड देन she was utterly disturbed with this concept, fine, and she never supported this concept of feminism. अब ज़रा हम इसकी समरी की तरफ चलते हैं. क्रिटिकल समरी of the short story A Sunrise on the Veld. The usual thoughts of the teenagers are far from maturity. At the age of 15, everything seems to be changed. Physical changes take place. A Sunrise on the Veld introduces the idea of adulthood and maturity through a child's eyes. A Sunrise on the Veld. Veld बेटा कहते हैं किसी ग्रासी प्लॉट को, राइट? यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत दरख्त हो और साथ ग्रास हो, यानी ग्रास ज़्यादा, उसे हम क्या कहते हैं? वेल्ड. फाइन.
तो इसका हम बहुत सिंबॉलिक ये स्टोरी है, इसको हम देखते हैं. Sunrise on the Well introduces the idea of adulthood and maturity through a child's eyes. New experiences of the boy helps him in transition from boyhood to adulthood. The boy feels that he is already mature enough to be an adult. The story is highly symbolic. The word sunrise stands for both early in the day and early in the boy's life. And the well symbolizes the world. अब बेटे ये कहानी जैसे हमने पहले बात की है वो यही है कि एक ऐसा लड़का है जो अपनी एज जो यहाँ पे जो बड़ा मतलब प्रोमिनेंट जिसको हमने किया भी है राइटर ने और हमने भी उसको करना है, देखना है कि 15 इयर्स जो हैं कि 15th ईयर्स, राइट. तो ये बड़ा मतलब एक ऐसी एज होती है जब आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में होते हैं, बड़े आइडियलिज्म में होते हैं, बड़ी फैंटेसीज में होते हैं, हम फैंसेस में होते हैं. फाइन. तो ये हम देखेंगे कि जो सफ़र है, जो जर्नी है फ्रॉम इनोसेंस टू नॉलेज, फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस. फाइन. ये हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करना है. द वर्ड सनराइज स्टैंड्स फॉर बोथ अर्ली इन द डे एंड अर्ली इन द बॉयज लाइफ एंड द वेल सिंबलाइजेस द वर्ल्ड. द फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट वर्ड woke, represents starting early in life, which could mean that the boy is trying to be mature too quickly and he probably cannot handle it. तो ये बेटे हर जो मतलब ज़िंदगी के जो इवेंट्स होते हैं, मामलात होते हैं, मुशाहदात होते हैं, जो स्टेजेस होती हैं, वो अपने वक्त पे अच्छी लगती हैं. यानी अगर कोई बंदा बचपन के अंदर ही बहुत बड़ा बनने की कोशिश करे और आप ये मतलब शाउरी कोशिश करें कि मुझे बहुत शाउर आ जाए, तो ये फिर आपसे आपका बचपन छिन जाता है, या हमसे हमारा बचपन छिन जाता है. यानी बचपन में वी शुड स्टे चाइल्ड, राइट, वी शुड स्टे चिल्ड्रन. तो हमें बच्चे ही रहना चाहिए. तो अगर हम ज़्यादा बड़े होने की कोशिश करेंगे देन थिंग्स वुड बी डिस्टर्बिंग. फाइन. ज़रा बेटा आगे देखिए. नेक्स्ट हम देख रहे थे कि द प्रोटैगनिस्ट गेन्स अ ग्रेटर कॉन्शियसनेस थ्रू द एक्सपोजर ऑफ अ न्यू रियलिटी ऑफ विच ही वाज नॉट प्रीवियसली अवेयर. इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू इग्नोर द न्यू रियलिटीज़. अब जारी बात है, जब आपका कोई भी जो आइडियलिज्म है, जो इल्यूजन है, उससे आप बाहर आते हैं, जब वो टूटता है तो वो चीज़ें बड़ी मतलब रैम्पंट होती हैं, अनकंट्रोल्ड होती हैं, आपके मतलब रसाई में, आपके हाथे में चीज़ें नहीं आती हैं, यानी बड़ी मुश्किल से टैकल होती हैं. Which he came to understand. The newfound awareness was so powerful that it changed each boy's entire outlook, and he began to see the world through new eyes. It was a journey from innocence to knowledge, from innocence to experience. A Sunrise on the Well is closely related to James Joyce, a short story Araby. In James Joyce की जो short story Araby है उससे मतलब बहुत रिलेट करती है, सिमिलर है. In both if these stories the protagonists gained a consciousness that was beyond them. The main characters are both initiated into new realities and truths of which they were not previously aware. यानी एक आपका जर्नी है, एक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है. फाइन. आप आशना होते हैं, शनासा होते हैं, आपको आगे ही मुयसर होती है या आपको मिलती है. फाइन. वो किस चीज़ के आगे ही है कि आप पहले एक आइडियलिज्म के इनोसेंस मासूमियत के दौर में रह रहे होते हैं, फिर आप एक्सपीरियंस की दुनिया में चले जाते हैं जो बड़ा ही, जिसको मतलब मैनेज करना, टैकल करना, केटर करना, ये हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है. बोथ द मेन कैरेक्टर्स पेनफुली लर्न दैट this initiation was beyond their control. The protagonist in A Sunrise in the World was stoical. The protagonist in A Sunrise on the World was stoical. Stoical बेटे होता है जो मतलब stoic हम कहते हैं जो pain और pleasure को respond इतना ना करे. Fine. In the beginning the boy felt in control of himself in every way and came to feel in control of the world in which he lived. This attitude changed completely after his encounter with the dying buck. अब उसको लगता होता है पहले कि दुनिया उसके कंट्रोल में है, वो अपने आप, उसका जो अपना आप है वो भी उसके कंट्रोल में है. फाइन. लेकिन इसका ये जो आइडियलिज्म है ये ब्रेक होता है जब वो एक बक जो है, बक बेटे क्या, डियर हर्न जो होता है, वो डाइंग बक, वो हर्न जो है वो ही इज डाइंग. फाइन. वो मर रहा है. He accepted the fact that there was nothing he could do to help and that some things were not in his power and were beyond his ability to control. मतलब उसमें एक
ट्रांसफॉर्मेशन आना थी, उसमें एक बदलाव आना था, उसका जो आइडियलिज्म था वो ब्रेक होना था। पहले उसको लगता था कि वो हर कुछ सब कुछ कर सकता है, हर चीज़ उसके कंट्रोल में है, लेकिन जब वो उसको डाइंग बग को देखता है फिर उसे अपनी एक हेल्पलेसनेस का अंदाज़ा होता है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ पेन है उससे वो मुतारफ़ होता है, राइट। He came to an awareness of his own limitations and accepted the inevitable. और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि उसके अंदर जो मतलब लिमिटेशंस हैं, और दूसरा ये कि जो कुछ चीज़ें होती हैं वो इनएविटेबल होती हैं, वी कांट कंट्रोल दैम। Fine. Though the character suffered and felt anger, yet he was satisfied with what he realized about the cruelty of nature and life. यानी उसको बहुत ज़्यादा मतलब पहले वो अग्रेसिव होता है, उसमें फ्रस्ट्रेशन आती है, राइट, गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो क्या करता है ग्रेजुअली उसके अंदर फिर एक रियलाइजेशन भी आती है एक्सेप्टेंस की, राइट, कि जो पेन होती है, जो सफरिंग्स होती हैं, जो टेस्ट एंड ट्रायल्स होते हैं, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो ज़िंदगी में मुसीबतें, कुल्फ़तें, राइट, आजमाइशें होती हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। द बॉय was very enthusiastic towards his feelings of delight and became aware of the negative side to joy. The boys were imaginative and romantic. Romantic से बेटे मुराद आप समझते हैं कि imaginative को ही बोलते हैं, fine. The boy had a purposeful obsession that taught him valuable lesson about life. For example, that nature can be hostile. जो फितरत है, जो बाहर के हालात हैं, ये अदरवाइज भी हो सकती है, हॉस्टाइल भी हो सकती है। द स्टोरी हैज़ बिन रिटन इन फर्स्ट पर्सन narrative. It has subjective tone. The writer has used a number of images to highlight the theme that man is insignificant as compared to the vastness of nature. यही है मतलब बेटा ये कहानी कि एक शख्स, एक लड़का है जो 15 साल की उम्र में वो शिकार के लिए बाहर निकलता है, फाइन। जब बाहर जाता है, घर से ज़रा दूर निकल जाता है, फाइन, वहाँ रह क्या देखता है कि हर एक ज़ख्मी है और वो मर रहा है। उससे पहले उसको लगता था कि वो जो पेन है, जो हेल्पलेसनेस है, राइट, इस तरह की जो चीज़ें वो उससे उसकी ज़िंदगी में वो शामिल नहीं थी, फाइन। वो इनके वजूद से ही, इनकी मौजूदियत पे उसको मतलब शक था, या वो उसको पता नहीं था इन तमाम चीज़ों के बारे में। लेकिन जब वो इनसे आशना होता है तो उसको जो अपने बारे में जो इल्यूजन थे, फाइन, जो वो अपने आप को बहुत ही कोई तोप चीज़ समझता था, वो अपना तलस्सुम उसका टूटता है और वो पेन की दुनिया से, हेल्पलेसनेस की दुनिया से वो मुतारफ़ होता है, फाइन। अब ज़रा आप कैरेक्टर देखिए, जो लड़के का कैरेक्टर, ये इसका थीम है वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस, वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस। इसी कॉन्टेक्स्ट में अपनी क्रिटिकल जो समरी है उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। बस जो लड़के का कैरेक्टर वो आप देख लें। The boy is the only important character of the story. He is only 15 years old. He is the protagonist of the story. The boy feels that life is a bed of roses. He is obsessively concerned with time and keeps repeating the following words: 4:30, 4:30. While sleeping, he turns his face to clock so that he could see if first when he awakes. He is quite confident about his physique. Every morning he stretches his limbs, feels the muscles tightened and thinks that he can control every part of his body. मतलब बेटे ऐसे जैसे को टीन एज में लड़के मतलब वो बड़ा अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं, बड़े तवाना फील करते हैं, उन्हें लगता होता है कि हर चीज़ उनके ताबे है, राइट। थकने की दुनिया से वो बिल्कुल वो नाशना होते हैं, उनको पता नहीं होता कि थक भी जाते हैं, इतने ज़्यादा वो रोब स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। He feels that he is capable to command every limb like a soldier, and even he can command the sleeping hours because he kept awakening for 3 nights and working all days, refusing even to admit that he was tired. अब ये एज अ ट्रायल ही अब वो 3 रातें 3 दिन जागता है और वो अपने आप को बताता है कि इतना मतलब जागने के बावजूद, इतनी मुशक्क़त के बावजूद उससे नहीं पता कि थकन क्या होती है। वो ये एडमिट नहीं करता कि वो थका हुआ है। The boy is used to go to morning walk. He does not want to disturb his parents. Therefore, he creeps stealthily. He walks miles in the morning, and he feels proud of his limbs and says, "I could walk 100 miles on feet like these. I could walk all day and never tired."
यानी ये वो चलते फिरते वो फिज़िकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करता है. The boy is leading a life of exaltation. He is used to set his legs wide and maintain balance from foot to foot. He is crazy and mad with joy. The word 15 is catchphrase for him, but the boy's outlook on life turns when he hears the voice of an injured buck. He screams and terror and pity seize him into convulsions. जब वो एक ज़ख्मी मरते हुए हरन को देखता है तो तब उसे पता चलता है कि कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है. वो जो नेचर की एक दूसरी साइड होती है वो उसे आशना होता है. He learns that pain and sufferings are the part and parcel of life. None can escape them. राइट, कोई बंदा भी इनकी गिरफ्त से नहीं बच सकता. ये हर एक की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है. तो बेटे ये देखिए, एक मतलब कहानी थी एक जो आइडलिस्ट है एक ऐसे लड़के की जो मतलब बहुत ही एक रोमांटिक, इमेजिनेटिव, जैसे मैंने कहा फैंटेसीज में, फैंसीज में रहता है. और अल्टीमेटली उसको पता चलता है कि जो दुख है, दर्द है, जो रंजो महान है, कुल्फ़तें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, ये तमाम भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ शॉर्ट स्टोरी. हमने राइटर के मतलब पढ़ा, इसके थीम्स भी मेरे यही बेटे अंदर डिस्कस हो गए और इसके अपनी क्रिटिकल समरी भी पढ़ ली. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.